जो बच्चों का कोचिंग में जो सब्जेक्ट रहता है ना, उसके अलग जो सब्जेक्ट रहता है ना, मतलब सोशल, हिंदी, इंग्लिश, तो वो टेस्ट सीरीज भी जाता है। तो उनका अलग पेपर आता है, तो कोचिंग का नहीं दे सकती। कोचिंग का अभी तो कोचिंग कर रहे हैं ना मैथ्स और साइंस में, तो तेरा पेपर कोचिंग का आता है और लगा है। तो मुझे क्लास टेस्ट देना पड़ेगा? क्लास टेस्ट देना पड़ेगा। अभी जो हुआ है ना टेस्ट, उसमें से देना पड़ेगा। जो नहीं हुआ है वो बाद में दे सकती है। मतलब संडे के दिन टेस्ट लगता है, तो टाइम टेबल देख के जाने का। थर्सडे को टाइम टेबल रहता है बोर्ड के ऊपर। अच्छा, देख लेने का कौन सा टॉपिक का टेस्ट है। उसमें नहीं आता क्या वेबसाइट पे? वेबसाइट पे भी ये ले शौर्य, हिस्ट्री का बोल दे। हम लोग तो कल हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का नोटबुक, बायोलॉजी का टेस्ट एंड एक्सप्रेशन क्लास कितने का आएगा उसका? कल तो मैथ्स का टेस्ट भी रखने वाली थी, रेडी नहीं है। हिस्ट्री को पढ़ा थी ना, बच गए पहले अभी अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग ज्योग्राफी तो हीरा ने तो कुछ पढ़ा तो नहीं है। तो तेरे को जो बुक लिया ना वो वापस देना। ठीक है। हाँ, तो तेरे को कोई ये ना, मैं लाके देखूंगी। जैसे मैं कोऑर्डिनेट होता है, मैं वो पहले कर लिया था ये तो ग्राफ बुक है, ग्राफ है चाहिए देखो। हाँ, मैं भी कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ, वो बात है। ये वाला पेपर तेरा रहेगा कोचिंग का। अच्छा, समझा? अब इसमें देख क्लास में कितना टॉपिक होंगे, टेस्ट होंगे। तो ये अभी है, तो ये आगे कभी निकल है। मैम ने बोला जो जो आपके सब्जेक्ट है वो खत्म कर दो। आपने इतना सब हो गया तो इसमें दिखेगा। तो डॉक्टर ने लिखा है न्यूज़पेपर का। हाँ, डॉक्टर जनरल डॉक्टर जनरल एंट्री लिखा है। बोला कि वो देख के आया था पर मैं आपको बोला तो टेस्ट होगा है। नहीं, मैं आपसे कभी संडे को पूछा ना सुबह, पर तभी नहीं था। कभी तक बोला कि मैं कभी नेक्स्ट क्लास में 10 बोला कि मैं देख के आया। फिजिक्स में क्या हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, मेजरमेंट एंड एक्सप्रेशन हो गया, मोशन से नॉर्मलाइजेशन। ये तो देख ले तेरा इस सिस्टम में और ऐसा कभी के ऊपर आके टेस्ट लिख लेना। और जो ऑनलाइन के टेस्ट है वो सब टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है क्या? और वो जो पूछ रही थी ना अभ्यास, हाँ, वो अभ्यास तेरे लिए मेरे के लिए है। तीन मतलब के लिए अभ्यास है। इससे कौन के लिए नहीं, वो तुमको अभ्यास का कैसा मतलब संडे को जो टेस्ट होएगा ना तेरा, उसका अभ्यास रहता है। अच्छा, थर्सडे के लिए हाँ, तो अभ्यास तो तेरे को स्टडी कर, वही बेस पे संडे को पेपर देते हैं। तो अभ्यास करते हैं नहीं मैं बस पेपर लेता हूँ और देखता हूँ रेफर। करने का वो प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ, बस पेपर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट निकालता हूँ। अभ्यास अभी अभ्यास मतलब ये सब अभी हम इधर आके देते हैं ना। हाँ, वैसे भी वो ऑनलाइन टेस्ट। हिंदी से कौन सा बोल तू? ये डॉक्टर जनरल फॉर 6 आवर्स। तो जनरल लिखी तो देखो कभी बीच में आएगा कोई
कल तो कोई मैच देखने का रहेगा तो वो भी जल्दी आ जाए दवा तो ये भी चलेगी एक बार देख सकते हो तो इसको भी मालूम है ना इसने भी टेस्ट किया ना पहले नहीं लिखी थी अभी भी लिखने लगी ये टाइम पीछे था ना तेरे साथ में कि नहीं नहीं लिखी अरे टेस्ट के बारे में हिंदी में इस समय ना पूरा कोचिंग का ना पूरा टेस्ट आएगा टाइप निकाल के ना और वैसे हिसाब से भी मुझे टेस्ट देने होंगे मतलब जब तक हुआ है तब तक आज आगे का नहीं आएगा अरे तो कैसी बात नहीं बता रहे कैसे टेस्ट दे मुझे नहीं पता मेरी माँ responsible people study को मेरे से वो मुझे इनको देखते रहना था पहले तो पैसा अच्छा ना ये वो ये लास्ट संडे को कौन सी टेस्ट है फिजिक्स का था मैंने कर लिया खत्म हो गया अभी कमेंट कुछ डेकोरेट करना कवर लाइफ मुझे बायोलॉजी को भी पढ़ना है अरे बायोलॉजिकल टेस्ट अभी किसी को ऊपर क्या रेस्पिरेशन में वाली स्कूल में किसी को ऊपर हिंदी में प्लांट्स क्या हुआ प्लांट्स नहीं एनिमल्स क्या हुआ आई हैव क्लास टेस्ट मम्मी बोल रही है कि 8 बजे आके पढ़ ले बोल रहे कल छुट्टी ले लेते हैं तो ये बोल रही कि तू आज मैं मम्मी से भी केमिस्ट्री क्या कल कल होता है there are majorly economic happening that theory major chemistry है ना हाँ क्या क्या कर रहे क्या मेरे स्टिकी नोट्स नहीं है मेरे डियर में देख ले देख हाय कैसे हो गया क्या हो गया 4:30 नहीं हो गया ऐसे मर चल यार वैसे तो ऐसे बात करने में अभी तक वो भी नहीं आए हैं आपका फेवरेट स्टूडेंट प्लीज all our favorite unnecessarily he is creating confusion of the special students to something ऐसे आपको क्यों लगता अरे इतना उसको अभी तक उसको कॉलेज सब पीरियड के बारे में देखा ना क्या उस पे डिफिकल्ट है एंड दैट डे ना कितना ऐसे बोलता था कॉलेज देखा ऐसा लगता है वैसे ही टाइम यूज करने के लिए लोग नहीं एक्चुअली ना वो कर लेता है पहले से हाँ everything he is doing by his own ऐसे मतलब I think maybe for testing this is also possible ये वो मिल जाएगा नहीं वो हट में नहीं जाएगा but कोई बच्चे प्रिपरेशन करते फिर this language of the textbook it is not simple to understand
थोड़ा उसमें पढ़ना पड़े तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन वाला चीज बढ़ जाता है. Okay, anyways, this is his method of understanding history person. Anyways, we will try to complete this topic today, and after that we have to start with hydrogen. Atmosphere ने जो मुझे दिया है ना उन्होंने शेड्यूल जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग ये वाला है हाइड्रोजन है. अभी बाकी के टॉपिक है स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एटमॉस्फेरिक है. आपने बोला था ना इसका डिस्ट्रिक्ट टॉपिक कराने वाले नहीं है. हम लोग फर्स्ट है इसमें मुझे अलाउड किया है उसके सबसे हाइड्रोजन स्टार्ट करके स्टडी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट तो चैप्टर करते हो तो स्टडी वाला चैप्टर देखो सारे टॉपिक असाइन कर देते हैं. मुझे पीरियोडिक टेबल के हमने ये वाला किया बाद में हो गया अभी टाइम चलो कितना बजे 4:30 डॉट टाइमिंग है. ओके आयुष आजा आगे कौन है आयुष के वजह आगे आपको लास्ट टाइम थे नहीं 5 6 then before that also yeah, before the verification no what was that person आइए बेटा नोटबुक ले लो वॉल्यूम ले लो टेक अ पेंसिल पेन नो आज फटाफट से रिव्यू करते हैं फॉर ग्रुप सेल पीरियड ओके एंड देन फटाफट से लिस्ट आपको का टाइप्स ऑफ इंप्लीमेंट ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो फ्रॉम आई थिंक वी हैव टेकन ऑन 6 ना 6 को हुआ था ना हमारा मुझे आई प्रेजेंट ऑन 6 बाकी तो सारे प्रेजेंट आई चैनल Dutch. So let's see same writing. He is also absent from last 2 days. के बाद में फास्ट स्कूल में ट्यूटर एग्जाम के लिए सारा हो गया तो नहीं अटेंड किया so periodic table are it combined with group and periods horizontal vertical okay so horizontal are horizontal yes yes horizontal period vertical groups or column horizontal periods or rows okay so total how many groups are there 18 from 1 to 18 okay they are divided into 8 1 to 8 are divided to 8 1 to 7 1 to 7 1 to 7 A and B but A and B is not all together na? A and B they are not together they are again grouped A here then remaining A here first A and first B on left hand side alkaline or metal and remaining from third A till third 7 so 7 to 7 to A first A and first second A or first day second day और last में first भी second भी
हाँ वैसे हाँ तो वो डन हो गया थर्ड बी से स्टार्ट हाँ थर्ड से स्टार्ट होते हैं 1 2 then third B. Okay, so under first A and for second A there are alkali and alkaline metal right now. So as block element extreme left of the periodic table, first A and second A, whereas alkaline or this one P block element they are on the right hand side from number तो आपको पता है third A onward, and at the end it is first A and first B. So second B. First A, first B and second B. Whereas the last column is of noble gases, zero to It's not divided. हाँ, it will start divided और उसको कोई number first, second, A भी कुछ नहीं दिया हुआ है zero. और third B से 13 चालू third A से 13 चालू चेक करो उसमें थर्ड ए से 13 हाँ थर्ड ए से 13 स्टार्ट उसने हमने लिखा है ना वर्टिकल और लास्ट का जो यूनिट और एक चीज हाँ देखो वो वाला जो मैंने कंटेंट किया था ना वो मैंने दो या पीरियोडिक टेबल देख के किया था अदरवाइज इफ ओवर दिस वन ना दैट इज लिटिल बिट कंफ्यूजन तो व्हाटएवर पैटर्न इज गिवन ना फॉलो इट अगर आप यूट्यूब पे या जो भी कोई इमेज देख रहे हो तो unnecessarily chaos create होगा so better do one thing make 1 to 18 according to right content even then while writing I have told you that first A elastic electron होता है for 13 I have said 3 electron is third A do you remember बार-बार मैंने वो point को focus किया था third A को so remember that sequence also okay now if you go horizontal there are 7 period ऐसे वाला हमने काउंटिंग किया था पीरियड नंबर तो period number 1 में period number 1 the shortest number of shells determine the period. number of shell determines the period so The number of valence electron determines the group number so if there are 2 shells then that element it belongs to period number याद रखना जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो फॉर एग्जांपल इफ यू आर लाइक फॉर लिथियम atomic number is 3 electronic 2 and 1 and 1 तो लास्ट वाला कितने टोटल कितने शेल हो गए so period number 2 period number 2 valence electron 1 so period so group number नंबर 1 ये वाला आप कैलकुलेशन है ना ये याद रख ये आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड दिस विल सिंपल एग्जांपल पहले एंड दैट और जो आपको पता है सी अदर can to the element from 1 to 20 atomic number as well as mass number. Atomic number, symbol, and element. So you also speaker alkaline metals alkaline earth metals halogens or 0 to 10 So this is done. Now for the period, which is the shortest, longest period, and that thing we have discussed. The shortest period is first and second. First helium, valence 1 and valence 2. कितने elements उसके अंदर है? Hydrogen and helium. Then second one, third and short period. Short period is one Second and third. Second, third. How many elements are there? Elements. 3, 6, 8. 8 elements. Okay. Then for next one, for fourth and fifth are long periods. Period. 18 okay. And 6th and 7th are longest periods with 32. 6 period is with 32 longest period. And 7 is here at incomplete period. हम इधर क्योंकि इधर उन्होंने लिखा नहीं है ये वाटर पीरियड टेबल रिलीज जैसे बोला नहीं तो इधर डैश क्यों Please मुझे ना कोई वाला भी डिबेट नहीं चाहिए that day I have surrendered that this book they have done before this textbook. Okay, तो इन्होंने भी ऐसा डाइजेस्ट करके छोड़ दिया otherwise in periodic table it is completely filled leaving 2 boxes for alkaline and F. अच्छा 6 और 7 both are longest period 6 and 7 both incomplete period बोले उसे incomplete longest होते से बोले उसे मैम वो इधर उन्होंने डैश रखा है तो उसे incomplete बोलेंगे अगर डैश ही नहीं है तो फिर incomplete कैसे बोलेंगे क्योंकि इधर डैश रखा है तो incomplete वैसे 6 में तो कोई डैश नहीं 7 में है हाँ चलो आपकी बुक में जो है वो पढ़ो
For this particular point, whatever things are given in your present text को follow करो, old वाला मत follow करो. Make it this volume it is as per the old text. चलेगा? Then next one, 7 के लिए given numbers and everything is given. Length and height and height are which group? 6 and 7. Length and height is 6 and height That you need to mention. बिना पूरे वो mention करना है. Then next is the type of the element. Now in types of the element, I think we have done this also. We have representative element. Alkali metal, alkali earth metal. Color types कौन कौन से हैं? We have 4 types. Representative, transition, Inner transition and inner gases. Inner gases. Okay. So under transition element, you know under representative element, these are the elements. Alkali metal, alkali metals. That all this one. Then for next one, transition element, mostly they are D block element. D block element. Then inner transition, they are F block element, lanthanide and actinide. Where in noble gases expedition you all know what are noble gases, why they are placed there, everything you know. आपको learn करने बोला है noble gases and halogen, so learn it. Learn it properly and learn which elements are radioactive again in that particular series. Okay. Then you have description of representative elements is given. अभी वहाँ पे वो आपके बुक पे नोटबुक में नोट डाउन करो क्विकली. हाँ, ग्रुप नंबर 1 2 केमिस्ट्री के टीम में केमिस्ट्री के टीम में डैश में ना. अच्छा केमिस्ट्री की टीम में डैश नहीं डाले. यहाँ पे कुछ और मिसिंग है रहेगा तो बता दो. Cross check these numbers with that first A, first B. हाँ, प्लीज जरा वो आपके सामने रेफरेंस रखो एंड ट्राई टू. क्या अभी मैं जो बोर्ड पे लिख रही हूँ ना वो लिख. हाँ, आपके पास में वॉल्यूम में एवरीथिंग इज मेंशन बट फॉर मेक मी हैप्पी प्लीज राइट इट डाउन हियर ऑल्सो. ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना. ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16 and 17. लिख लिया? Third 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17. This all are under S and P block element. Yes. And 1 2 is S block. What about this? These are P block. This all are included under S and P. बराबर है ना. This two are S, 1 this and 2 2 S is and this all are P. 17. बराबर है ना. This block element. Now one by one, this first group element, they are known as 1A. alkali metals. हमने इन सबको we have included this all under representative elements. Remember this, these all groups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, they are all known as representative element and they are in S block as well as P block. Okay, and which groups are there? 1, 2, 13. देखो हाँ, ध्यान से देखो S P 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17. ये sequence आपको learn करना है. Now first group number 1, it is known as alkali metal. Put dash and write there alkali metals. Alkali metals. अब ये कॉपी करना है. हाँ, आपके बुक में भी है. देखो representative element page number ऐसे है. अच्छा लिखा है. ऐसे लिखा. जरा अच्छे से पढ़ के फर्स्ट वन ग्रुप 1 alkali element. Okay, after that property is given, they as a forms of alkali with water. They are soluble gases, so when they react with water, for example, if you have Na, it will form Na. If you have K, it will form KOH. Okay, then next one. हो गया? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ. हाँ, आज भी हमको कंप्लीट करके दूसरा स्टार्ट करना है टॉपिक. सारे ब्लॉक डिस्कॉप करना. क्या हुआ डिस्कॉप हो रही है इसको मिलो. alkali metal लिखा भी उसका खबर सीखना. नहीं, पहले हम लोग ये पूरा कंप्लीट करते हैं. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, उनके क्या कैरेक्टर है एज पर द ग्रुप.
Then we will go for the next one. Main character of representative element को बात करें. पहले इतना लिखिए. बहुत सारे characters हैं. For transition, inner transition, inner or next लोग क्या होते हैं मतलब लिखते नहीं है कुछ. ओके. ये इतना लिखो पहले. Right one. Remaining part we will discuss. चलेगा नहीं. फिर वो कल बोलेगा she is your favorite student. फिर कल कोई और बोलेगा आज तो बोलना है. फिर सर बोलेगा चलो चलो लो लिखो. पेपर लिखना है इतना 100 मार्क्स का. I don't know 80 मार्क्स 20 मार्क्स इसको प्रैक्टिकल. पर पता नहीं तभी लिखने में एक टाइप की जोश आता है। हम चाहिए तो मैम Now you write. अभी जो That time I was struggling. कि भाई हमको मार्क्स मिलना है कंपटीशन में कोई है घर से सुनने मिलेगा टीचर डांटेंगे बच्चे साथ वाले हंसेंगे और कुछ रहेगा यहाँ पर कुछ नहीं देखते को नहीं देखो ये तीन महीने बाद हम देखते हैं इसलिए मैं थोड़ा इसलिए आप एकदम मीडियम लेते हो रिलैक्स चाहते हो. हाँ बट मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग सब लोग यहाँ पे आगे सारे डायमंड है बट डायमंड को पॉलिशिंग इज रिक्वायर्ड. यू आर नॉट रेडी टू पॉलिश योरसेल्फ व्हेन इट इज ऑफ नीड्स. हो गया. आपने हमने वो पहले स्टार्ट करते हैं राइटिंग फ्रॉम जुलाई है. चलो लिखो फर्स्ट वन अल्टर यू हैव डन जुलाई लास्ट मंथ आप अलग जून में तो ये वाला सेंटेंस मुझे बाद में लिखना है. आई विल से दैट सेंटेंस. ओके फर्स्ट वन में आपको पढ़ा थॉट आपको करना alkali metal, they are strong alkali with water. Then next one alkaline earth metal. So alkaline earth metal, but last time I have told you they are directly obtained from the earth crust and hence they are known as alkaline earth metal. And this metal they form weaker alkali as compared to group 1. What is meaning of this? They form weaker alkali. weaker alkali is as combined with the group number elements of the group number 1. What is the sentence which we read it properly? जो फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट्स है उससे वीक हो जाएंगे. Even second A element they form alkali with water. But they are weaker हाँ तो alkali. ऐसा नहीं बोला. भी बोल मत. हाँ अरे नहीं टीचर्स को अरे नहीं करने का मैंने तो घर पे जाके अरे करोगे क्या मेरे जैसे हम तो नहीं सुनने वाली अरे. नेक्स्ट वन ग्रुप 13 the first member of group 13 it is boron. अभी लास्ट टाइम मैंने शायद बताया था जो फर्स्ट मेंबर रहेगा that member it is representative and that whole column will be represented as a family. Okay so boron family. The carbon first is a carbon family. Nitrogen is first nitrogen family. For oxygen, it is oxygen family. Right now, first one boron family लिखो. हो गया सब लिख के. 13 में which is the first element? Boron. So that family it is a boron is the first member of the group. Then for 14 it is carbon, 15 nitrogen, 16 oxygen. फिर फैमिली को कार्बोजन भी बोलते हैं. Carbogens, C-A-L-C-O-G. If you want, you can write down. ये उसमें नहीं दिया है. But ऐसे दिया है, नहीं दिया है. And even in our word is say for nitrogen family also. Find it out. Carbogen is easy to remember था नहीं इसको Google को मत देखो. What that is that. चलो next. Done now. So representative element which are present. Number 1, 13 to 17. Okay. 1, 2 का तो आपको पता है. 13 में which element? First element. बोरॉन फैमिली. बोरॉन first element. बोरॉन family. देखो अभी इसके और एक इजी याद करने है. B and C. Okay. B alphabetically B then C. So 13 and 14 अगर याद नहीं रहता तो 13 14 alphabetical order में एक्चुअली अगर पहले चार ओके चलो
B, C नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जहाँ तक याद रहता है वहाँ तक याद रखने का कोशिश करो। अदरवाइज many books are there to remember periodic table also. You can go with any of the trick. अच्छा वाला कोई लेना, एकदम गंदा सा मत करो। Because when it comes out in the class now, बहुत गलत sound करता है, बहुत चीजें हैं। Now next one, main characters. ना फर्स्ट 20 याद रखना है पीरियड। I will suggest at least first 20. If you are going for 30 also, I will do. 20, हाँ। लेकिन serially वो आपको आने चाहिए। बीच के आ रहे तो आप atomic number में मान खा लोगे। Okay, then main characteristics of the representative element. Now for main characteristic, we know these are the element of group number 1, 2, 13, 14. Yes, okay. वो ये सब property मैंने shortcut में बोली थी, but क्या लेना है इतना भी नहीं है। So which are those property? They both are Alkali has soluble bases in water. Then metallic characters increases from top to bottom. okay, left to right, 2 points हो गए ना, left to right, top to bottom, बराबर है ना ऐसे उसमें। और They most of them consisted of metals. okay, the metals on which side वो भी बता दो। Metals on which side? Which side? Left side. Left side, right side में Metal. non-metals. And remember one more thing, when you are moving from left to right, we are saying metallic property decreases Non-metallic increases. and non-metallic increases. Non-metallic increases from right to left, and in between there are metalloid. Don't forget this. Then Then they are good reducing agent. And the metals other are good reducing agent, but they go on oxidation. Okay, they undergo oxidation and act as a good reducing High agent. melting and boiling point. High melting and boiling point. What about types of bond? Bonds Ionic bond. नहीं वो कोवैलेंट भी बनाते हैं। Carbon it form covalent bond, but all carbon Ionic. bond, for example, CO is showing covalent bond. No. So Ionic. so most of the metals they form Ionic bond. Remember this, they form ionic Metal with a non-metal. metal. Metal वाला ionic. Metal ionic bond metal with a non-metal. आयोनिक की कोवैलेंट में क्या होता है? Non-metal with a non-metal. तुम्हारा क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा। Covalent bond. For metals, it is ionic. Okay, NaCl is an example. अगर तुम यहाँ पे कोवैलेंट इधर for non-metals ना Cl2, it is हम पूछ रहे हैं covalent bond किसके बीच में होता है? But non-metal and non-metal ना. covalent bond Non-metal and non-metal. Ionic metal and non-metal. metal. ये सब एक पहले चिन्ह चीजें मचा देगा। Okay, so mention and variable oxidation state वो तो नहीं बताया। Oxidation state का क्या है? Oxidation state yeah, oxidation state oxidation state same different increasing from which side मैंने directions बताए आपको। It is having variable oxidation state ये वाला बात हमने डिस्कस किया था। What about electric conductance? Good electricity. They are good conductors of electricity. On Metals. what about non-metals? Bad conductors of electricity. Carbon is helping for electric conductance. Except करना है तो मैं डालूँ इसे। The metals they are good conductor of heat and electricity. Remember this, yeah. some metals exhibit variable valence. Variable valence, or you can say variable oxidation state. Remember this one. Now the next one it is for transition element. Transition element are D block element. बीच में लेंगे periodic table में। अभी से transition जो term दिया है ना, is it is only because of transition of element. Electron from lower energy level to the higher empty d. अब जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या होने वाला है? You will get colored
I. Colored iron will go into water. So they will give you, for example, this and this iron is colored. Why it is colored? Then you need to mention why it is colored due to the transition of electron from lower energy level to the higher energy level. अगर आपके book level दिए है textbook में, हाँ, how the transition इसके अंदर है बताइए. अब ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कलर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखो अगर ट्रांसफर करेंगे तो कलर मतलब आयन का कलर चेंज होता है, याद रखो. और ये तुम्हारा अगर इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रांस in class 11 to 12th में transition reactions. Now for characteristic, the first point is given. They are having high big block element. They are having high melting point and boiling point temperature. Then they are good conductor of heat and electricity. They are attracted towards metal, magnets, and they are used as a catalyst. This is very important. Like color, this point is very important. Most of them exhibit variable valency. It is same because some part of the block element is under metal part right now, so they are also having variable valency. सब में ये इन एग्जांपल पूछो. हाँ, ये वाले का पार्ट में आएगा ना, यहाँ पर है ना एस ब्लॉक पे थोड़े पास में ब्लॉक से मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे जो रहेगा अभी नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा ना, बराबर. हाँ, राइट साइड जो पी के थोड़ा पास में रहेगा. Then most of this element form colored iron. देखो लास्ट पॉइंट दिया है, हाँ, colored iron and colored form. मिला आपको? So only it is given they can form colored iron and colored compound, and why they are forming, that reason is not mentioned. reason है तो टेक्स्ट बुक में इसमें नहीं दिया. इसमें नहीं दिया है तो टेक्स्ट. So you mention it for this one of volume में. they form colored iron. They form colored ions and colored compounds. Because this is very important again, they may ask you question as it is given in your textbook. They form colored ion and colored compound for transition element. Okay, समझ में आया? Good reason is not given. Okay, and what is the reason? अभी हमने किया ना transition of electron take place from lower energy level to higher energy level. If they are asking why they are colored, अगर नहीं पूछा तो दिक्कत मत लेना, समझ में आएगा. Variable oxidation state now say when we are transferring the electron automatically there will be change in the oxidation state. So they are showing variable oxidation state. Good conductor of heat and electricity. Okay, समझ में आया तो ज़्यादा difficult नहीं है. Then next one it is for inner transition element. Now under inner transition element again your lanthanides and actinides are included. They are at the bottom with a series of 14 element. Now in case of inner transition element, first point is given they are having high melting point and boiling point. बराबर है, उनका atomic numbers भी हमने देखा, it is very high, so they are having high melting point, boiling point. Again they are having variable valency, right? They are having variable valency. Then next one they are colored. Inner transition, which is under and actinide. Then again they form the colored ion. So yes, they form the colored ion. Split colored ion. Again, reason is the same. Then next one, lanthanide. Actinides. This one. Electrically ion. Actinides are radioactive by nature. Actinides are radioactive in nature. बस इसके बारे में इतने 4 पॉइंट्स ही दिए हैं, and those points are similar to your textbook points. Okay, but the petals में कोई points पढ़े खाली color, variable oxidation state. Okay, ये पढ़ गया उसके अंदर. Then going to the next one, it is an inert gas. Inert gas का तो मेरे ख्याल से कुछ पता नहीं है. There have stable electronic configuration either nucleate or upright except helium which has upright reference to zero valency. All of them are gases. Variable valency. Variable valency. Global gases with variable valency. The global gases with variable valency. कैसे करती कर रहे हो? हाँ, उनका valency का उसका valency का क्या है? Stable है, आपका वैसे, this one.
नहीं रहा है वेरिएबल वैलेंसी बोल के चुपचाप बैठ गया है आराम से सो नो उनका वैलेंसी वाला आगे बोलना ना नहीं यार तुझे बोलने का मौका हम नहीं देने वाला इसलिए हर एक पॉइंट को हम लोग बराबर से नोटिस करके पकड़ लेंगे फिर ना यस मेड फोर मिस्टेक्स ओके only first mistake. नहीं नो डोंट chalo next one now the next point is marriage so please note down these points बैठ मत आराम से marriage of long form of the periodic table ना नहीं तुम लोग थक गए ना लिख के but you do study by your own ये otherwise it will be difficult to remember till the end this topic I will answer for your final exam मुझे भी लगता है सर कुछ पार्ट रह जाता है फिर अदर टीचर विल कम अदर टीचर और वो टीचर इसे ना लास्ट टाइम मैं बोल रही ना कम टीचर्स आर वर्किंग फॉर दिस ईयर कुछ चलो merits of long form of the periodic table अगर वर्कलोड ज्यादा हो गया तो that time they will decide because मेरा schedule already from school it is very important. Sure. Next one, merits of long form of periodic table. Now tell me you have done different things. Progress before this modern periodic table, we have done different theories. We have done one more periodic table. तो आपको क्या लगता है periodic tables के क्या क्या merit हो सकते हैं? If you ignore this particular boxes and you go with your textbook modern periodic table or Google wala periodic table, so merits are there or not? If you compare it with the previous, कौन सा था वो? Mendelian periodic table. So merits are there or not? there है या नहीं? there है ना? तो कौन से merits है? According to you, हाँ जबरदस्ती नहीं है जितना according to Mendeleev and all other कंपेयर scientists करो सिर्फ पेरेंट्स बता modern periodic table is the way of atomic number atomic number is the first point fundamental property fundamental easy to understand. easy to understand इतना ऐसा बचकाना नहीं है with respect that it showed proper periodicity of elements. अच्छा वो पॉइंट पे हम आते हैं periodicity is one of the merit now see modern periodic table is based on atomic number and atomic number it represent the physical as well as chemical property of the given element so this is a one point okay and what about the positions of element in the periodic table when we are saying Perfect manner में It is sorry. इसका perfect मैंने पूरा कर लेते you are in lands this complete topic is there ये point आप बोलोगे मालूम जब आपको कुछ नहीं आ रहा है what are the merits understood ना because actually you don't know anything as per me you have not attended any lecture but those who are sitting here right from beginning we have done many theories ये वाला periodic table to come on this modern periodic table it is not at all easy for us मतलब for you people ओके तो सोचो उनको कितना तकलीफ हुआ रहेगा वो बनाने उसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करने एंड टू टेस्ट दोस एंड इन बिटवीन मेनी स्टूडेंट्स आर गुड स्टूडेंट्स दे आर रिमेनिंग एब्सेंट तो साइंटिस्ट भी ऐसे रहेंगे ना दे आर रिमेनिंग एब्सेंट सो आफ्टर बट दे विल रेज क्वेश्चन नो दिस इज नॉट लाइक दिस इज लाइक दिस So again that teacher has to explain the thing कि भाई ये ऐसा नहीं है teacher कौन कोई जिन्होंने मॉडल periodic बनाया है because it is not like that कि once it is done मतलब over मैंने देखते हैं खत्म हो गया इसका step wise उसका explanation देना है ओके चलो अभी मैंने आपको आंसर बता दिया चुपचाप करके खाली सुन प्राइस क्या है और पॉइंट आता है तो बता दो with respect to periodic table कोई इजी है टाइम बच रहा है एनर्जी बच रहा है उसको ले सकते On the position of elements, for example, element fluorine, atomic number 17, to its 7 electronic configuration. So the number of shells determine its period number and it is correctly arranged in the same period number and the group. सुनो
So when we are saying, you say example chlorine लेके बोला मैं आपको उल्टे से बता देती हूँ atomic number we are saying and we have arranged that element in the increasing order of the atomic number. Okay, from left to right we have done that. Left to right, ऊपर से नीचे हमने उसी order पे किया है ना. So what we are doing, we are properly placing that element according to the position that we are saying. So position is what according to the electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा तो नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन 5 है वो एकदम ऊपर जाके प्लेस हो गए. इट्स लाइक दैट. It is like that. No, so according the positions are according to the atomic number, and when we are saying atomic number, it is directly related with the number of क्या valence electrons, number of shells. When we are saying atomic number, it is directly related with the number of protons. Proton is equal to electrons, and these two numbers are always equal. बराबर है ना? So atomic number, number of electrons, number of protons, this is one and the same. हमारा point क्या है? Atomic number. But atomic number will be always considered as a number of protons. Same thing. Number of protons is always equal to number of. Isotope में थे नहीं वो हाँ उसमें अभी मैंने atomic structure में समझा मैं दिया. देखा है. Next one, it shows regular change in the property of various elements when moving across the period and down the period. So variation is there in different properties. Variations, for example, metallic property, non-metallic property, from top to bottom, from left to right. Variation is there. That we have already discussed. We have not discussed this one, atomic size. Do you remember? Atomic size का picture बताया था. So from left to right, हाँ बोला वाला decreases from left to right. Increases, and what is the reason for that? Left to right. Metals and non. So the non-metallic character. Non-metallic character decreases and metallic character increases. But now we are using atomic size now. So metallic nature, I reason why does it decrease from left to right and Decrease in the shells. decrease in the shell? Like Like that. But Decrease in the the number shell. of electrons arithmetically decreases by 1. Dick. पकड़ के मारेगा तुझे. मेटल से Number of electron decreases. No. मेटल से Number of electrons increases. Left to right. Every time we are increasing one electron. कुछ भी बोलती है. In same shell we are adding electron and we are completing the electronic configuration. देखो जरा 17 पे आपके 7 electron and 0 group पे 8 electron. तो फिर वो increase ही होता है. कहाँ नहीं होता? Left to right is increasing, my dear. Top even picture is given here. See. पर ये सीक्वेंस आपको से समझ में नहीं आने वाला. ये देखो ये सब हॉरिजॉन्टल दिया है. चेक करो कहाँ पे पढ़ा था? ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन. अरे हाँ भाई समझा, मिस्टेक हो गया. ठीक है. ओके यार क्यों इतना करेक्ट से हमको कम करने के लिए नहीं करते हैं. मतलब आपने ऑलरेडी काउंट किया है. माय डियर ना तो 40 एक बेटा आ जाए यहाँ पे बैठ. I'm a second period. Second period easily. नहीं then बैठ. अरे वाह Otherwise, it is easy, it is simple to अरे remember. मैम यहाँ पे पॉइंट है. Okay. Then next one, periodicity. Periodicity है तो उससे पहले point बताया था. Periodicity का what the same point. If the same characters are repeating after a definite interval, it is known as regular interval. It is known as periodicity. So it is there in your period, right? है ना period में any column में है कहाँ पर है periodicity? Periodicity. period तो रेगुलर था है ना. period. हाँ vertical rows. When you consider any group which show same properties, They can have the same identical properties. properties, okay. But when you are going from left to right, metal to non-metal, there will be change.
लेकिन तुम अगर वो काउंटिंग करते हो फॉर एग्जांपल 1 to 8 कर रहे हो 18 पे जाके फिर से 1 के तरफ आ रहे हो ना वो सारे काम के जैसा हाँ तो फर्स्ट एंड दैट बिलो एलिमेंट इट विल शो द सेम प्रॉपर्टी चलो हो गया पीरियोडिसिटी एस्ट्रो मिनट्स पे डाल सकते हैं डाला है मिनट्स पर मेंडेलिव टेबल में भी था उसके पहले भी था ना वो लेकिन वो इस फॉर्म में ये वर्ड दिया हुआ है लैंड में नहीं था सारे गामा वाले में नहीं ये वर्ड डिस्कवर नहीं किया था तो टेबल में था but it is set it was same okay now the next point is a different इतना तो अच्छे ना डिफरेंस डिफरेंट पता अब पहले तो लैंथनाइड का सीरीज मतलब नीचे डाल दिया अपना पीरियड टेबल अलग ही वरना क्योंकि वो पीरियड टेबल का पार्ट है तो उसमें डालना चाहिए और सेकंड हाइड्रोजन का प्लेस अभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था हाइड्रोजन का ये प्लेस सेटिस्फाई नहीं कर रहा था नंबर पर भी पेज नंबर 1 so hydrogen का place it is right hydrogen का place यहाँ तक पूरा periodic table if hydrogen is not placed properly then lengthen and उनको उधर चाहिए था periodic table पे but due to the less space both series are placed below it and one more is there few elements are not arranged according to the बस ये इसका एक ही एग्जांपल होता है तीन एलिमेंट्स लिखा है उसका एक ही ऑक्टेरियन का जो है इधर कौन सा वाला इधर इधर के नीचे होना चाहिए पर जो डैश है सेकंड था उधर से डैश है what about this एस्टी मिडल के नीचे डैश नहीं है हाँ तो इधर ऑक्टेरियन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो लास्ट में 6 आता है पर अगर हमने इससे देखा तो 8 आना चाहिए अच्छा मैं आपको ये बोल रही हूँ के एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रूल अब तो बात इजी है पर वो सिखा दिया हमें 7th में 8th में 9th में next one moving to the properties of general trends in the modern periodic table general trends is variation so metallic non metallic जो हमने इतने जैसा property डिस्कस कर रहे थे उनको ही कट शॉर्ट करके फॉर बॉक्सेस लगाया है now first one is a number because these are properties then group and period ये कॉलम्स बनाया है first property is number of shells in the valence electron बिना शोर मचाते take your 2 minutes time and tell me how does it vary in group and period ना बेटा आप दोनों भी जरा मुंह खोलो जरा समझाएं आपका क्वेश्चन question is we are working on the variation of different properties in group and period okay in this the first property number of shell and valence electron number of shell उसमें चेंज कैसा होता है in group in period valence electron how does it change in groups and period नहीं only 2 minutes start and this figures will speak बाद में आपका फिर हम नहीं करते we are doing you read it you also even you have to speak now yes ज़्यादा टाइम मैंने दे दिया ना okay we are doing number of shells in group so group is vertical और horizontal और description आपको अभी नहीं चाहिए right ना right okay period right understood now how does the shell varies whether it is increasing decreasing it remains the same by moving in a group top to bottom number of shells बता दो group and period please number of shells in group group is a vertical part if I am right so number of shells they are decreasing increasing right they are increases then in period they remains the same remember they remains the same and whatever the arithmetically added electron where it will be
enter in the same shape. And due to this, what happened? Attraction between that valence electron and nucleus, it goes on increasing slowly. The size decreases. Atom size shrinks down. So it decreases. Then next one. Next one is in the same point valence electrons. Valence electron. So in group, the number of valence electron, they are decreasing or increasing. What is the meaning of valence electron? Number of electrons in the valence shell, that is outermost shell. Outermost shell. So from in group, in the outermost shell, valence electron, whether it decreases in No, in periods it remains the same. ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना क्लियर हो जाएगा। हाँ तो वो पॉइंट से पढ़ो ग्रुप्स के लिए इंक्रीज होता है, पीरियड्स के लिए सेम रहता है। देख सही ना थोड़ा सा सोचते हैं अभी तक हमने कोई आंसर निकाला नहीं है वी आर वेटिंग फॉर द आंसर द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस ओके arithmetically the number of valence electrons equal to the number of the group to which electron elements belong also the number of gate element हो गया करें मैं और जो है make clear Now related don't you think both of you are talking too much Number the spots. with the time exact time our period is for 1 hour and not wrong it has been 45 नहीं मैम फर्स्ट इज 45, सेकंड इज 45। Sure. उस दिन के लिए बस 1 घंटा। Second. मेरे पास और मेरा मैम वहाँ पे दे। पर वो तो बैक कर दे उधर का भी रॉन्ग ही है। it is 15 मैम तो हो गया। let me complete this okay the number of electron मैम बोल रहे हैं आप तो विश्वास नहीं कर रहे। क्या करूं आप तो बहुत बोलते हो ना क्या लगता है चल बाहर जाके ग्राउंड मार के आ जा तो क्लियर करना है हमको पॉइंट वी हैव टू कंटिन्यू विद दैट पॉइंट टेक्स्ट बुक पढ़ो थोड़ा टेक्स्ट बुक में वो पॉइंट पढ़ो अपकमिंग हाँ मैम पता है। वैसे देख पे हैं तो बाकी गेम खेला नहीं है तो लास्ट में पूरा कैंसिल कर दिया सेकंड वाला केमिस्ट्री है। ऐसे तो देखो इधर ये जो कर रहा है ना इधर मैंने लास्ट टाइम तो मेरा लास्ट मैं इससे प्रतिभा मैम समझ ले अरे मैं बोल रही हूँ सेमेस्टर की प्रतिभा मैम नहीं थी अपने मैंने यही स्टिकी नोट्स यूज किए थे और मुझे मेरा लास्ट टाइम में हिस्ट्री प्रोजेक्ट कुछ नहीं किया था तो फिर मुझे नहीं पता पर हमारी मैम को बोला कि रॉन्ग मिलेगा पर ऐसे मैम ने खुद देख फिर सीआर का ही तो देखता है शायद ना सीआर ने ऐसे ही किया था हाँ ऐसे ही किया था क्रिएटिव अब देखा जाएगा काटने अभी देखा जाएगा काटने और मेरा डिप्सी नहीं हुआ है कल है हाँ 15 को भी अरे मेरा और मराठी का 8 पेज करना है मैंने सब खत्म किया मुझे पिक्चर से डालने ताकि मुझे बायोलॉजी का काम खत्म करना है बायोलॉजी को पढ़ना भी है हिस्ट्री का कंप्लीट करना है कंप्लीट करना है बहुत सारे मैंने हमारी वो भी मंडे और मंडे में अभी 2 चैप्टर सिखा के वो ज्योग्राफी की क्लास में मैंने मुझे भी नहीं है नेचुरल रॉक्स छोड़ बल्कि हम में टॉप सब कुछ नहीं लिखा आज बताते हैं काफी sorry What excuse me wanted the use
ये बहुत लास्ट टाइम का हुआ था। बोलता हूँ मेरे को बहुत कहा कोई बात नहीं हमारा घड़ी आगे रहेगा ये देख कितना हो गया 18 हो गया तेरे घड़ी में अरे सर 2 मिनट तो बाकी है। एक 17 हो गया अरे सर 2 मिनट ये अभी just दो अभी मिनट 2 मिनट हुआ मैं 2 मिनट किस खाना जो वाला मेरे हम दोनों जा रहे हैं जा रहे हैं वैसे ये मैं समझ आई हम जा सकते हैं जैसा किधर जा रहा है मेरी माँ को मुझे लॉबी के एकदम से सोच करके बिठाया एक पीरियड में आ जाओ कॉल करना पड़ेगा यार गुस्सा आ रहा है यार क्योंकि आज तो प्रेजेंट है यार। वो मम्मी को कॉल करने गया तो उसको घर जाना है नहीं जाएगी ना क्या बोल रहा है नहीं क्या सीधी से ना बोल दिया क्या उसने दिक्कत ना बोल दिया मम्मी क्यों कॉल किया अगर लोग बोल अरे वो बाहर है तो सारे बात ना अरे क्या हो रहा है मैंने बोला मैंने सर मैंने बोला तब आपने बोला नहीं सर्वर नहीं मिला है मतलब तेरा सर दूसरा किसी नाम को तो क्या मोबाइल पे कॉल करना है सब मेरे पास तेरे मोबाइल रिचार्ज हुआ है टेलीफोन अब तो किसको हेडेक हो रहा था क्या मस्ती करने के लिए हेडेक है और फिर बात पहला भी इतना डाउन हो जाता है इसे अरे नहीं इतना चेहरा कैसे आकर सर दूसरा तो अरे नहीं ना अगर उसका सर दुखता तो इतना एक्टिव नहीं रहता ना सर मैं वैसे डर रहता था देख मैंने कंप्लीट को क्लास क्या इतना अटेंड नहीं करते अटेंड करना कर हेडेक सच्ची में हो रहा है अभी मैं सॉल्यूशन ये है डोंट वांट टू अटेंड द क्लास बच जाने का राइट हां तो सीधा बोलो ना सीधा बोलो उसको हेडेक हो रहा है देखो सर घर से मेडिसिन में क्या आया था झूठ अरे भाई हेडेक होने पर तो इतना एक्टिव नहीं रहता उसके पीछे का साइंस ही इतना हेडेक होता है तो इतना मेरे से आर्ग्यू भी नहीं करता हाँ चेहरा अब वो तेरा अरे पैसा रहता पैसा फाइट मैं सच बता रहा हूँ नहीं तेरे पे हेडेक नहीं बोल रहा हाँ हाँ 1 घंटा बैठ जाओ बस तेरे को सच्ची में हेडेक हो रहा है पीरियडिक पीरियडिक टेबल ना और नाम तो मुझे आता नहीं पर हमको आया ये क्या याद करता ये टाइम के टीचर नहीं हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं शौर्य पैसा ला रहे हैं आता है उसके साथ हाँ तो मैंने बोली भाई तुम सभी लोगों के सामने देख कर झूठ बोल भाई पहले ना उसके पीछे का लॉजिक तू कल ऑनलाइन कर रहा है ना 100 ना सो रहे हैं पहला लेक्चर अटेंड करके दोनों लेक्चर दूसरा लेक्चर आएंगे तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आफ्टर नहीं नहीं गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा ना इवन फॉर 1 मिनट क्रॉस फाइटिंग वेरी वेरी चलो आज हम एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गुड बैलेंस इलेक्ट्रॉन का आंसर इतना है हाँ मेरा भी गुड है उससे मैंने शेयर किया बैलेंस मतलब क्या ऐसे लगता है ना ना उनका सिलेबस ऐसा ही है अगर ऐसे ऐसा तो ऐसे कोई टॉपिक कोई भी बात चलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप
तो आज तो फिर आज ये वर्कआउट कर ले आज कुछ भी बोलते कोई टॉपिक खुला कर दे सो ऐसे आवेदन तो पढ़ के आए हैं ना वो मेरे बाकी के तो बच्चे हैं ना करने को कुछ हाँ तो आज तो फिर एनपीवीसी भी नहीं है जो कोई I will note down everything in my diary and next PTM I will inform your mother. Okay? हाँ चलो 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 हाँ मुझे बताओ गर्ल्स आई एम वेटिंग फॉर आंसर पेरेंट्स is removes number of valence electron is the same किसके लिए है पीरियड्स के लिए होता है same सेम पीरियड्स के लिए होता है और पीरियड के लिए होता है ग्रुप में इंक्रीजेस होता है पीरियड्स में सेम रहता है सेम रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ तो फिर लिखा कैसे रहेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली कंटेन माय डियर अल्कली कंटेन 1 electron alkaline contain 2 electron randomly you take any period from left to right even in the previous one you only told arithmetically it is subtracting but it is not subtracting it is increasing by 1 1 बराबर है ना increasing by 1 1 what we are doing we are increasing by 1 1 मतलब उसके लिए वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है कोई जरूरत नहीं चुपचाप ना बेटा दरवाजे नहीं काटना खा रहे हो मैं तुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कम होते हैं और they are remaining the same increasing number of valence electron are increasing from left to right alkaline earth metal देखो ना if you are going for halogen there are 7 electrons there are 7 electrons for noble gases 0 to 4 because out of shift is completely fixed okay what about top to bottom same मतलब क्या वो तो पता किसके मतलब क्या तो पॉइंट क्लियर करो सेम इक्वल का मतलब क्या है मुझे पता जैसे हमने यहाँ पे बोला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर इंक्रीजिंग राइट व्हाट अबाउट टॉप टू बॉटम दिस इंक्रीजिंग और रिमेन्स द सेम हां बैलेंस वही तो आपने जो बोला ना वो लोग बता रहे ना हाँ तो अभी मैं तुझे पूछ रही हूँ ना कितनी बोला हमको क्या टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ वैलेंस आपके मतलब है top to bottom नहीं increases for all Increases, reasons बराबर है okay now in our volume 1 point is given underline करो the number of electron shells मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किया वो लिखो पहले the number of shell increases राइट है पॉइंट चेक करो हाँ number of shell increases राइट ना from top to bottom number of shell increases arithmetically the number of valence electron equal to the number of the group to which the element belong equals to number of the group to which elements belong underline करो इसके इक्वल है it is equal to number of the group for example it is in group number 3 so it increase according to that यहाँ पे the outermost electronic configuration हमको 3 मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बता दूं एक सिंपल बनाना क्लोरीन सिंपल है सो फ्लोरीन 9 F क्लोरीन how much is the atomic number 17 Cl okay these two are in the same column same group 2 and 7 here it is 2 8 and 7 last shell valence shell contain 7 electrons and they are in group number 7 समझ में आया तो जो ग्रुप नंबर है उसका कैरेक्टर क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स
So whatever elements are present in this group, they will contain 7 But if you are going from sodium to chlorine, there will be increase in the atomic number. Share रूप नहीं रहेंगे. देखो यहाँ पे share हम बढ़ा रहे हैं ना. ये point हमने discuss किया था. Number of share we are increasing. Yes, we are increasing number of share, but the last share will contain same number as the number of the group. याद रहेगा? Sure. देखो इस point का जो meaning है is this one. Write down example. 9F17Cl. समझ में आया? वो पॉइंट क्लियर हो गया? This side, no issue with that point. So if you are going with noble gases, helium, then neon, argon, helium-2 वो तो अलग रखेंगे. Neon atomic number 10 Ne, argon 18 Ar, electrons 2 and 8, here 2, 8, 10, 8. Okay, now see here again. These are zero group on 18 वाला part है वो 8 electrons, right? Here again 18. Valence electrons. So valence electron is always equal to the number of the group to which they belong. चलो. Then on this side, ये तो हमने कर लिया है ना. For period from left to right, shade remain the same, and number of valence electron they are increasing from 1 to 8. बराबर है ना? Then next one, valence. Valency means what? Combining capacity of an Combining capacity, or in some books you can find it is a number of electrons. number of electrons created used or shared with an element. वो हमारी टेक्स्ट बुक का New addition में रहेगा. Normally it is in this balance. ये ऐसे कोई ये करना किया. Okay, number of electron is equal to the number. And valence is equal to number of electron in the last shell, valence shell. Okay. Now, in our book it is given valence of the element definition shell of an element is equal to the number of electron present in the valence shell. बराबर है? यही हमने discuss किया ना, underline में इसको करो. So what about in groups and period? ये बताना है. In groups and period. Valence electron in group, start with group number 1. How many valence electrons are there? उधर से देख के मत थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो ना. Group number 1 it is alkali. Okay, how many valence electrons are there? 1. Check करो अभी correct है. Second one, alkaline earth metal. How many? 2. Check it whether it is right. Then coming to 13. 13 वाला बराबर है ना? कौन है 13 वाला? 3. 13 वाला 3. It is a boron. What is atomic number of boron? Sorry. Atomic number, it's 5. Okay, so 2 and 3. Right now, 2 and 3. 5. So atomic valency is 3. Right? Next one, 14. Carbon. Okay, carbon. So in case of carbon, valency is 4. And atomic number is 6. Valency is 4. Then next one, 5. Oxygen है क्या nitrogen है? कौन है ये? Hydrogen, 2 nitrogen. This nitrogen. 5. One is nitrogen. Just now we have completed. Valency of group 5 is 3. And how it is 3? Last shell contains 5 electrons. बराबर है? Nitrogen atomic number is 7. Last shell contain ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो बाबा. 7 and 2 and 5. Right? Last shell contains 5 electrons. But in order to complete this octet state, this 8 plus 5 is equal to 3. -3 नहीं लिखना है, 3 लिखना है. इलेक्ट्रॉन अगर आप डाल रहे हो तो नेगेटिव करके इलेक्ट्रॉन डालने वाले हो. ऑक्सीडेशन नंबर अगर गेन एंड लॉस हो गया देन इट इज विद माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. अदरवाइज व्हेन यू आर शोइंग द वैलेंसी इट इज पॉजिटिव टर्म. कौन?
ये नाइट्रोजन तो इसमें टाइम डालने की कोई जरूरत नहीं है आपको. If you are talking on oxidation number ना, it may be positive, it may be negative. That time write down sign, otherwise not required. देखो, और नाइट्रोजन का it may be trivalent or pentavalent. Few examples are with trivalent valency, few are with pentavalent. Okay, तो पैसा वाला example है. ये उठो, उठो. तुम्हारे लिए दिखाने की कोशिश करती है, तुम लोग सर डाल के बैठिए. Next one, for 16 1. 16 ऑक्सीजन oxygen. Electronic configuration 2 6. Where 8 got 2 and 6. So how many more electrons are required? 2. It is given. Then next one for halogen. Baat kar liya hai. Halogen पर one example we have taken. Halogen one only. One electron is required and last one is noble. With no electron is स्टेबल 0. Then on right side, in periods. In periods. The valency of the element with respect to hydrogen increases automatically from 1 to 4 and back to 1. 1 to 4 and back to 1 with respect to hydrogen. तुम्हारा सर बहुत दुखता है. Okay, size. Size point we have already discussed. क्या discuss किया था size में? From left to right, size Decreases. increase नहीं लगे हो. It is decreasing. Right to left increase होता है. Top to bottom. Increase होता है. हाँ. Order एक ही follow करो. हाँ. See everywhere it is left to right. You also follow the same pattern, otherwise you will be confused. आपने increase बोला, so from which side it is increase? Left to right to left. So if you are changing that particular term ना, तो please go जहाँ से जिस direction you are following, write down that direction also. So from left to right, it is decreasing. If you are going from right to left, it is increasing. समझ में आया? Direction proper follow करो. Top to bottom it increases, but from bottom to top it decreases. Picture share तो picture देख लेना. इससे अच्छे वाले picture तुमको colorful मिल जाएंगे. Okay, बड़े वाले से start करना है. You have to start with the earth and end it on windy. Okay, so from left to right, the sequence chart रखो. It decreases from top to bottom. It increases. Then next property is a metallic property. This thing we have discussed. Metallic property. बेटा पता हो metallic property का क्या हमने किया था? हर lecture में metallic property क्या करें? Metallic non-metallic. I'm tired of this metallic property. I इतना ही part है. I know that you okay. In fire center, in my school, same thing. बोलो metallic property. नहीं, anyhow on the next grade I have to start with hydrogen. क्योंकि ये बात से तक तो अपना काम कर 10 सेकंड है. चलो. Metallic property from left to right. It increases again. Metallic property increases from as we move down. It increases. Sure, everyone. हाँ, उधर से, यहाँ से. Left to right. From left to right. And which property increases? Abhi you said it is increasing now, left to right, and which property is increasing? Non-metallic. Non-metallic. On the left hand side you will get all the metal, whereas on right side right on metal. चाहिए तो एक बार periodic table को YouTube पे या images block पे जाके देख लो, and in between in P block you will find zigzag patterns. हाँ, इसमें downloaded and periodic table तो लगा दूँ. But वो वाला जिसका sequence बराबर नहीं. Okay. Now next one. Next part is specific study of specific group. Under specific group only two groups are mentioned, alkali and alkaline. Group number 1 and group number 2. और इसका ये कितना है बेटा उसका? वैलेंसी कितना है alkali और alkaline का? तू तो देख के नहीं ऐसे को फटाफट बोलो. Alkali का 1 and alkaline का 2. Alkali are also known as alkali when dissolved with water it forms soluble bases. soluble bases. What about alkaline or metal? They are found rarely from all.
Next level, electronic configuration. So for electronic configuration, you know what is the capacity of this energy that for KLM and number 9 यहाँ तक आपने किया KLM and आगे क्या है? n तक आगे के नंबर सीखते हैं आगे है क्या वो हमने नहीं है मैं आपके लिए सिलेबस और मैं बोलती हूँ KLM till Q till Q and numbers are in that increasing sequence only. आज जल्दी से come fast. KLM till Q हमें रख कर हाँ सब रख बस इतना एक साइड का रख कर ना आप लोग अपने बुक में कंप्लीट कर लो KLM till Q हमने कहाँ तक किया था KLMN right now this 4 we have done and what is formula to find out 2n square 2n square. Now do one thing. He is writing all. It is only increasing order. Write the number of electron in the remaining orbits. Shells. हम ये टेबल को हाँ ये टेबल जो रेडिमेड दिया है हम इस पे वर्कआउट करने वाले इसके मैंने बोला लिखो आप ये L M N O P D Q ना Q तक then 1 2 अच्छा ये तू ही लिख के दे रहा है सर उनको लिखने दो सी you just write down ये सब मत लिखो ये लिखा this is shell then n का value here n is equal to 1 2 and here number of electrons this part table understood. Till 7 see here shells we have written value of n till 4 you have value okay till 4 you have number of electrons also so find out the number of electrons for the remaining one चलो करो जल्दी से मुझे बता दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं सॉल्व नहीं करूंगी तो तुम मत सॉल्व करो दे विल डू इट बाय आंसर वो ऐसा लिखना पड़ेगा कि इस पर टू इट टू वन ऊपर फॉर्मूला उसने ऑलरेडी 12 फॉर्मूला इज दैट्स अ होल एप्लीकेशन फॉर्मूला उसने पहले लिखा है कि दिस इज शेल दिस इज वैल्यू ऑफ n you just write down number of electrons in the respective shells मुझे नहीं पता कैलकुलेशन करके मतलब कैलकुलेशन करके पड़ेगा हो गया तो पास कैसे किए आपने किया लास्ट स्टेप वैल्यूज बता दो स्टार्टिंग से दस दस तो वैल्यू इज 2 यहाँ तक तो हमको पहले से पता था 50 20 72 और 90 अच्छा that uses you will do by your own na there is not much for the uses part by reading your also you will understand how to go the part मेरा ये पूरा कर पाएंगे मैं कर लूंगी and 50 we will take 2 or 3 questions on exercise that फिर 6 ना अच्छा 20 अच्छा 20 हाँ और तुम्हें डेली 32 50 72 80 that's 90 okay
Then now in our group, this distribution column is given between group number 1 and group number 2. Okay, so if you look at the element, all elements of group number 1, the last variation, how many electrons it will have? For group number 1, how many valence electrons? That's 1. For group number 2, valence electron, it will be 2. Up group number 6 पे जा रहे हैं, so valence electron 6. Understood now? So with respect to the group number of valence electrons are plus 1. Another thing, now it is having 1 electron, so using 1 electron is color easy. Easy. Yeah. So when it is losing 1 electron, it is becoming electropositive. So that will be reactive ion. Okay. Ion है वो अगर electropositive content it means lost just 1 electron with electronic configuration 2 and 8. So this ions, group number 1 metal ion, they are reactive, and this is the reason why they are not freely available. They are always in the combined state. Remember this, huh? As compared to this one, group number 2, the valence electron is 2. Okay, valence electrons are 2. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं उनको, तो पहले एक होगा फिर एक होगा, ऐसे 2 स्टेप में प्रोसेस होगी. At a time both the electrons not lost, they are also reactive, but as compared to alkali metal, they are less. So this is one point of difference. Now when we are saying less reactive, तो थोड़ा बहुत आपको combined state पे तो मिलेगा ना. This is the reason why they are present in the earth. Then second, nature. By nature, group number 1 and group number 2. So first point is given which group element are very soft. Sodium is in which group? 1. It is very soft. So that's why. Okay. It is also soft. Okay. But sodium color silver color. So it can be easily cut with knife. Okay. Then in group number 2, elements they are grayish white or harder than alkali metal. There, sodium it is soft. आपने कभी लैब में experiment करोगे test for alcohol, if you are doing or you are preparing hydrogen gas, then you have हो गया ना hydrogen gas. First group, the first element hydrogen अभी preparation of hydrogen gas from sodium metal is given. So sodium metal with water. Okay. It is forming hydrogen gas. Again, second reaction is sodium metal with alcohol. It is giving hydrogen gas. तो दोनों चीजें possible है. Then bonding. प्रैक्टिकल सोल्यूशन है उनको बनाई तो 10 की बोर्ड में आना पर नेक्स्ट बोर्ड के क्वेश्चन में. हाँ. Practical chemistry you are saying ना. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में अगर मैम आपका लैब में प्रैक्टिकल हो गया ऑन डेली बेसिस रेगुलर बेसिस व्हाटएवर इट मे बी, सो व्हाटएवर एक्सपेरिमेंट योर टीचर इज टेकिंग फ्रॉम लैब मैनुअल, एक लैब मैनुअल है ना, तो उसमें से फ्यू एक्सपेरिमेंट दे विल कीप फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम. और मतलब आई डोंट नो अबाउट योर्स, but for this one CBSE 10th standard they will have external exam, and 12th standard they are having external exam. आपका मुझे पता नहीं, आपको है स्कूल की टीचर स्कूल पर इंटरचेंज करते रहेंगे ना स्कूल वाइज. हाँ, आपका एक स्कूल रहेगा, इनका दूसरा रहेगा, इंटरनल एक्सचेंज होता रहेगा, मे बी अदर स्कूल से होता रहेगा, बट फॉर दिस वन सीडीएस व्हाटएवर. नेक्स्ट करते हैं. देन एक्शन ऑफ एयर, एक्शन फॉर बता दें इसमें ना. अच्छा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमें बताना. Both are metallic compounds. So metallic compound contains ionic bond, and ionic bond is formed by Metal and non-metal. okay, but how it is formed? By transfer of sharing नहीं हो, sharing में transfer of electrons. Then action of air. First one, alkali metal, they are reactive, so action of air will be there, right? Along with air, there will be action of water also, action of CO2 gas also. So with that, you will get oxide, hydroxide, as well as carbonate. Three different types of reactions are given. Better देखिए जरा पॉइंट. You can get oxide,
hydroxide and carbonate. They may ask this reaction of what is action of oxygen on sodium. उसको start Oxidation. हाँ but reaction पूछेंगे तो वो भी लिखना पड़ेगा ना. Oxide. First one is oxide, second one is hydroxide, and third one is carbon carbonation. So metal with this three, oxygen, water, and third one is carbon dioxide. It will form oxide, hydroxide, and carbonate. Then next one, action of water. अभी मैंने just बताया था. What will gas हाँ. And one question है ना always missing in next topic we are having a reactivity series. आपका student हुआ है. So hydrogen is there in that reactivity series. सीधी देखी रहेगी ना आपने. So sodium, potassium, they are at the top. Highly reactive, and in that also many times they are asking question why sodium metal is kept in kerosene. Why it is kept in kerosene? Because it can easily displace hydrogen. और क्या reason है? And hydrogen is below sodium in reactivity. और अभी हमने क्या किया है? It can vigorously react with water. React with water, moisture check with that, and there will be formation of fire. Okay, so it easily catches fire. This is the reason why sodium it is always kept in the kerosene. We are keeping it under kerosene. We are keeping in paraffin. Lab में हम लोग paraffin में रखते हैं, kerosene में भी रखते हैं. So iron can have If you reason why a halogen called salt form. yeah, salt Formers. formers. Halogen का electronic configuration 287. Again 7 last electron. और salt के लिए they combine with metal. So I think that electron माने तो फिर वो दोनों शेयर करके sort करना. Salt form. और salt में charges क्या रहते हैं? Positive, negative, 1s1 और Attracted by positive and negative ion. वो याद रख. Then next one, action of acid. Action of acid. So again there is filtration of hydrogen. There same reaction is there in your first group element hydrogen. देखो ना पे थोड़ा समय पहले मैंने आपको ये ऊपर वाला reaction बोला था ना. Again you have metal with HCl. It forms metal chloride with hydrogen gas, and hydrogen gas can be identified by popping sound. One thing in another topic in metals and non-metal, I don't know if you have in 9.10 metal and non-metal action of acid on metal. है ना? तो हाँ, तो when acid react with metal, it form metal salt. Metal. अब ये क्या है? Acid salt है ना? देखो acid and metal है ना? You are getting salt and water. No, I don't. Acid with metal is salt and hydrogen gas. और हाइड्रोजन गैस के लिए वो आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस स्मॉल एक्टिविटी आइडेंटिटी गिवन इन योर बुक चेकिंग बोलते हैं formation of iron. So formation of iron is there. How many electrons are lost in metals? Alkali metal 1. With alkaline earth metal, how many electrons are lost? 2. And what will be the configuration of iron? For metal it is M plus 1. For alkali earth metal it is plus. अच्छा मतलब क्या? मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? gain or loss? Lose. So alkali metal, if it is giving 1 electron, M it is converted into M positive. Alkaline earth metal 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके उनका आयनिक स्टेट कैसा रहेगा? पॉजिटिव. ओके, नंबर बोला ना कप्पा. हाँ तू स्मार्ट है. मैंने बोला ना कप्पा. मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया. I know you are smart. And on losing 1 electron, it becomes M positive, right? 1 positive. Similarly, alkaline earth metal it loses 2 electrons, M2 positive. देखो यहाँ पे 1 electron loss, 2 electron loss. ये क्वेश्चन है आपको पूछा. Unique positive and dipositive. Unique positive and dipositive or bipositive. Then next one, dipositive. Strong reducing agent. दोनों ही रहेंगे. Then flame color.
फ्लेम टेस्ट में तो फ्लेम टेस्ट में ये हमारे then आपको प्रैक्टिकल गोल्डन येलो कलर के सोडियम का है lilac for wait लाइलैक उसका शेड मैं कुछ different metals they will form different flame colors. ज्यादा शोर मत करो. You have this topic in your class 10 also. So flame color test. Okay? ये पेपर आपको नेक्स्ट क्लास में करना है. एक मिनट. Yeah, लेकिन ये 10 का टॉपिक है कोई लगा नहीं. Then preparation. Preparation obtained by electrolysis of molten salt, and there also it is obtained by electrolysis of molten salt. Molten salt. Okay, and first thing, molten salt, then test. It is with the help of platinum wire. There is a direct chemical. प्लैटिनम वायर हम लोग प्लैटिनम नहीं कोई अलग ही वायर कोई अलग ही एलिमेंट का वायर पूछते हैं तो देखो क्या लिखते हैं. एकदम से प्लैटिनम दिया प्लैटिनम ही हम लोग यूज करते, कोई और नहीं यूज करते. हमने बोला कि प्लैटिनम इज वेरी एक्सपेंसिव सो वी डू नॉट यूज इट इन आवर लैबोरेटरी इंस्टेड वी यूज अ डिफरेंट एलिमेंट उसका नाम लिया दिया. अच्छी बात है क्योंकि हम लोग as we don't have platinum wire we are not doing that test. But it is a perfect what we can say example to see the flame colors. Procedure is very simple. You have to take the given salt plus dilute HCl एक thick paste बनाना है and that paste it is collected on the loop of platinum wire and heated in a liquid. Okay, so once you Break it in wires. तो उसके अंदर फ्लेम का अलग अलग कलर डेवलप होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग PVC salt then it will form bluish white flame. Then if you are doing barium salt it will give green color. If you are doing calcium salt it will give this one brick red color. So different colors are obtained and you can easily tell which salt is given to you. Okay. Then next one group number 7A. So 7A are halogens or practical C. Here 777 everywhere you can see 777 7FCl Br IN KT. सब यहाँ पे दिख रहा है. लास्ट शेयर में आपको 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन सा 7 वही एग्जांपल मैंने आपको दिया था फर्स्ट टू right. Then most reactive non-metal because they are in the need of only one reactor. Then increase in the melting point and boiling point top to bottom. Only one. The last one is a radioactive remaining all are not. Then fluorine is pale yellow gas. So we are doing in lab halogen. Fluorine will give green gas. Bromine it is giving brown gas. Reddish brown gas. ऐसा fluorine pale yellow. Then you will the zero group again zero group वापस हो गया वापस से हटा वापस. Okay. And usage you will do by your own. yes Not so that tomorrow मत कर डाटा मारने का जरूरत नहीं. और इनसे आपका करना and Different. till 20 minutes. So we will start with another topic. At least so the part start for the और ना यही चैप्टर का रिवीजन करेगा. Processing actually very right processing. Because since from last 2 months. एक महीना नहीं हुआ. चलो next 100 page number 100. लिखना कुछ नहीं मैं नहीं लिखूंगी. In this class don't write it. चलो ले लो. New topic start करो. Study of first element hydrogen. नाम लिखो टॉपिक का आज का डेट. अरे नाम लिखो यार आयुष. आयुष और आप भी खुद लिख रहा आप ऐसे दिक्कत करोगे ना. तो remember I will ask that this one coordinator नहीं तो तो किस लिए
मैं तो वहां से डायरेक्ट सेंटर से I will ask them to change my periods. I will make someone to take this period. फिर बैठो बातें करते हैं अच्छे से। क्या है हाइड्रोजन फूड पड़ता है पूरा नाम क्या है Study of first element of the first element that is hydrogen. Yes, yeah. मेरा स्लाइड चलो theory of first element hydrogen बेसिक से स्टार्ट करेंगे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे कि आप लोग थक जाएंगे so periodic table just now we have completed what point अभी तक हमारे दिमाग में fresh है we have just seen how hydrogen it is prepared right now and when hydrogen is placed in the periodic table First period, first group. पहला वाला First element, first period, first group. first group one है और And the first आज जो सब कुछ फर्स्ट की सब कुछ वही तो बोला है. first period, first group, okay. Symbol of hydrogen H. Then atomic number, One. mass number, 1.2. 0 213 and molecular formula, Huh? molecular H2. H2. Electrons, 1. one and it is present in which shell? First cell. Table. Okay. ये तो सब हाँ. ये आपको तो सब आता है Basic. सब बेसिक्स है Basics का ये इसमें पूरा चैप्टर ही हो गया. क्या बनता हूँ Okay, chalo, next one. Position of hydrogen in periodic table. First. We have discussed what is position of hydrogen in that. मानो ये एडिट में ही दिया है first cell. मैंने सब कुछ दिया है. Then next thing is similarities between hydrogen and alkali. Now we have to see the similarities in hydro. क्या बात करना है इस? हवा का जो आता है. Band of the विषय बन जाना ना 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 ये देखो बोलो. band of करते हैं. Similarities between hydrogen and alkali. Now these two are taken together. Reason is very simple. Both is having one electron in the outer portion. Just now we have done the alkali metal of heart. Electronic configuration is नहीं कर रहे इसलिए अब आपका मिस नहीं कर रहे इसलिए मैं बैठ रही हूँ So alkali metal, they contain electronic configuration one valence shell. They have one valence shell. Similarly, hydrogen have one valence electron, right? And this is the reason why we have to study them together. Alkali metal as well as hydrogen. Okay. हमको alkali metal का just now we have completed. The first point is given electronic configuration. So electronic configuration is similar for alkali metal and hydrogen. बराबर है ना 1s1. अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो शेल का नंबर बढ़ जाएगा but valence electrons are the same. Right now, first column ka, if you take examples we have done, if you take any element, number of valence electron it is equal to the group number. Right? First one. Second one, valency. Valency कितना है? 1. Hydrogen का सब 1 करके assume करके आगे जाना. Then ion formation. Whether hydrogen is forming ion, hydrogen contain how many electrons? 1. 1. It can form ion. Yes. Which ion it can form? Hydride. Positive. And how positive ions are formed? Because it's By losing electron. mass. Barabar. So when hydrogen loses its one electron, it becomes H positive. Okay, H positive is also known as Cation. okay, and for hydrogen, Hydride.
Hydride. Hydride. It is proton. Hydrogen is without electron and it is known as proton. Hydride compound में अगर तुम consider कर रहे हो तो हम उसमें hydride compound करोगे. Otherwise only hydrogen atom without electron it is proton atom. तो उसका तीन आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. वो आइसोटोप है. आइसोटोप में क्या डिफरेंट रहता है? हम उसका मास का डिफरेंट रहता है. It is because of difference in the number of protons. Yes. Difference in the number of protons. See, simple वाला बना लेते हैं. For carbon, because frequently we are using carbon in organic also. T, C, C. Everywhere it is 6, 6, 6. This is 12, 13, and 14. Right? Now for this one, P is equal to E, which is equal to 6. Okay. Then for this one, N, it is 6. What about this one? For this one, this isotope, value of P and E, it is 6 again. And this value, number of neutron, 7. 7. बराबर है ना? How to do this? Yes. A minus Z. A minus Z. Here it is 7, here 6, and here it is 8. So same atomic number, different mass number, and this difference is only due to number of neutrons. हाइड्रोजन का क्या है इसको बोलते हैं? हाँ. प्रोटियम, हाँ, ड्यूटेरियम. ऊपर के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं, बट ये वाला कार्बन वाला एग्जांपल एंड हाइड्रोजन एग्जांपल वी विल फाइंड इट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. और कार्बन वैसे भी तुम्हारा ऑर्गेनिक में है. बेटा ऊंचा. Then reducing power. Reducing power. Reducing power. Alkali metals, they are undergoing oxidation. They are acting as a good reducing agent. अपने नाम क्या है? दक्ष ने बता दिए हैं. Right now, they undergo oxidation. They are good reducing agent. So hydrogen is also having the same valency. So it will not behave like alkali metal. It undergo oxidation. It will be a good reducing agent. Then burning. Burning. Hydrogen burns. Oxygen burn. कौन burn करता है? क्या क्या? I'm asking. मेरा question है. मुझे उल्टा question मत पूछ. हम ऐसे रखा ना, hydrogen burn in the presence of air. And oxygen helps for burn. Right now, oxygen burns by itself, and hydrogen burns, and oxygen helps for burning. So hydrogen, it is burning. And one more thing, when this hydrogen it comes in contact with the proper number of oxygen atom, then it will be converted into water. ये भी आपको याद रखना है. burn सब अलग. But अगर वो proper हाइड्रोजन is combustible in the presence of oxygen. class 10 or 9 or 8, मुझे नहीं पता. आपने डाल्टन थ्योरी पढ़ा होगा. Yes. तो उसमें डाल्टन थ्योरी में हमने एक पॉइंट पढ़े. when atoms of different element they combine in the fixed proportion, a compound is formed. अरे वो मैम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डिफिनेशन है. तुम्हारे कौन से टॉपिक में है और कहाँ पर है डाल्टन थ्योरी, कौन से टॉपिक में मुझे नहीं पता, but this is cellular syllabus that I know. Now this compound water, it is not showing property similar to hydrogen and oxygen. Independently different property बता रहे हैं ना. But if you change that proportion hydrogen oxygen का, then instead of having water you can have peroxide also. H2O2. Also by changing the proportion you will get uniform. H2O. Another example, see. One example I am giving you H2, H2O, H2 plus O2, it will form H2O. If H2 plus O2, it will form H2O. This is peroxide. Similar, the simple reaction to remember is C plus O giving CO. Okay. This CO, if it combined with one more, it will form CO. मैम पर वैसे रिएक्शन हो नहीं सकती. ऑक्सीजन ऑलवेज 2 इसमें रहता है. Okay.
ऐसा रिएक्शन हो नहीं तो सकता। कार्बन 10th स्टैंडर्ड में मेटलर्जी है, मेटलर्जी में लास्ट पार्ट है इन विच कार्बन लाइनिंग इज यूज। रिमेम्बर इलेक्ट्रोड इट इज अ कार्बन लाइनिंग, oxygen it is formed at the surface of carbon and this oxygen is combined with carbon to form CO2 and further it is made to combine with O to form CO। कल ही मैंने पढ़ा उस सेल के अंदर दिस थिंग इज हैपनिंग। मेटलर्जी में है, गिलास पार्ट है। ओके, नेक्स्ट वन combination with non-metals, so it will combine with non-metal, oxygen is also non-metal, it will combine with that, so these are the similar properties, then similarities between hydrogen and halogen। ओके, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा है it can give 1 electron, it can become positive, it can act as a reducing agent। On the other hand, if it is sharing electron, if it is taking electron, दो चीजें बोल रही हूँ, if it is sharing electron, if it is taking electron, okay, then you will get the new compound, you will get the new compound, okay, if hydrogen if it is combining with chlorine, then HCl gas is formed, and that bond it is covalent bond। शेयरिंग हाँ, share covalent bond बराबर है, because hydrogen it is in need of 1 electron, similarly chlorine it is in need of 1 electron। अच्छा बनाना जरूरी है, अच्छा बनाना sharing electron, simple example, covalent bond formation। Okay, again this you have in class 10। समझ में आ रहा है, पास में ना हो रहा आपका। This topic you have for final or term exam, Final. so next month you are having exam। Yes, ma'am. So this is your topic number 6, total how many you have? 8, 5, total you have 8, so out of 8 I think 5 are there or 6 are there for your term? We have This- chemistry, this chapter. atomic 1, structure, 2, 3, 4. अच्छा ऐसे किया है, रैंडम किया है, सीरियली नहीं है। And ma'am, in this, the language of chemistry, they have repeated. क्या है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री? Ma'am. मैम एक लैंग्वेज जिसमें केमिस्ट्री बोलते हैं Radicals, and after that Atomic structure. atomic structure, molecular formula, Atomic mass phase, बस यही है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अरे chemical formula ठीक है। not difficult। वो difficult लिखी है। अच्छा, फिर atomic structure है हमें। आपको क्या है टॉपिक से? वो अगेन पूरा डायग्राम थे, and do the for atomic model, आइसोटोनिक पढ़ने का वो इतना नहीं आएगा, बस 1-2 बार पढ़ के आ जाओ और बाकी के जो बेसिक्स है वही करते हैं। बेसिक मतलब उसमें क्या करते हैं? उसके बाद तो एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कैलकुलेशन, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट, इतना ही है। और आइडेंटिफिकेशन में फॉर एग्जांपल क्लासिफाई आइसोटोप्स एंड आइसोबार ऐसा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन विल बी गिवन और प्रोटेक्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसा सिंपल एग्जांपल ही देंगे, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे, बट यू डू वन थिंग, प्रिपेयर द डेफिनेशन फॉर आइसोटोप, आइसोबार एंड हाउ टू फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास। इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, एवरेज एटॉमिक मास इट इज देयर ना। हो गया? ठीक है, बनाया। What is this? ये बनाना था सही Condition. इतना बड़ा स्पेस था। बनाया Okay, मैं बता दो अभी इसमें कितना गड़बड़ घोटाला तुमने किया। You made a correct figure, but representation is wrong. First thing, ये और ये, okay? ऐसा मैंने क्या बोला? You made correct figure, but proper representation is not. This is nucleus, right? You are showing hydrogen, बराबर है ना? Instead of writing in this much big circle, हम नहीं बोले ऐसे लिखेंगे। और फिर इसको क्यों इसके साथ में इनजस्टिस किया? CL समझ में आया?
Another thing, अभी ये आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाए for 17 and this one total 18. So which electron is from hydrogen and which one is from carbon? For that you can give cross and dot. It will help you. Another thing, we are showing covalent bond. This two electron ऐसा लग रहा है कि इधर के ही शेल में है. हमने जबरदस्ती दोनों को साथ में लेकर आ गए. नहीं, मैंने क्या बोला, इन टेक्निकली योर फिगर इज करेक्ट, बट टेक्निकली देखोगे ना तो उसमें इतने सारे एरर्स है, तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करो. सो दिस इज अवर हाइड्रोजन, ओके, ये वाला हाइड्रोजन H. Then chlorine, we will go with only the valence shell. This is chlorine. Now electrons 1, 2, 3, 4, 5. लिखोगे 6 and 1 7. Then in hydrogen 1 electron. Cross dot मैंने कर लिया. Okay. Now when I am showing overlapping, show that overlapping part properly. This is that overlapping. Cross and dot. Hydrogen, chlorine. This molecule it is HCl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखो. हम वहाँ पे ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं फर्स्ट स्टेप में. Box. हाँ मैंने एक हाँ बॉक्स ऐसा नहीं बोल, ऐसा बोर्ड में कर सकते हैं, पता नहीं. ऐसा. अभी आपके मैम ने जो बोला है, in order to get more marks, you go by that pattern. But this is what we are following. It is there in our textbook also. So this मुझे तो लगता है कि ये हम बता रहे थे साथ में. But when we are saying it is sharing. Sharing मतलब equal होना चाहिए. So if I take only this circle, small one, 2 electrons are visible. If I go with this circle, there are total 18. मुझे सिर्फ इतना बोलना है. अदरवाइज वट एवर योर टीचर इज गिविंग यू इंस्ट्रक्शन, फॉलो दोस इंस्ट्रक्शन. है तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा और देन मेरे ऊपर आएगा. वैसा मुझे नहीं चाहिए. बट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इफ यू फाइंड इन बुक यू विल गेट दिस. हां, मेरा ड्राइंग खराब है. मेरा बहुत अच्छा है. मैं तो हमेशा बोलती हूं माय ड्राइंग इज वेरी ड्राइंग तो मैं लिखूंगी. चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या दिया है? ऐसा लग रहा है तो घड़ी लगा के बैठे अगर तुम मेरे वहां पे स्कूल की क्लास में तो एक अच्छा सा खा लेते. एक्चुअली मैं तुम खा लेते. I'm not joking. Seriously, I'm saying that now this sentence also. टाइम हो गया. कितने बजे दोस्त की शाम में कितने बजे उसके 12 बज जाएंगे. हमें कभी तो हम बेल मिस करें. So what? Same thing is happening everywhere. It may be early, it may be late. We are here to completing our syllabus. We are here for studying purpose. So why you are considering that bell? जितना होगा उतना ठीक है ना. आप भी फ्री, मैं भी फ्री. क्या अभी डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं तो चलो. कहाँ तक हमारा हो गया था? बैलेंसी. हाँ. अच्छा फर्स्ट पॉइंट हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक. I think we were discussing about the bonds, metals and non-metal, how the bonds are formed. वो भी सीखे हैं. Formation of ions we have done पहले. Electronegative character. हाँ, electronegative character means मतलब हाँ भी एक कितना इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 287 हाइड्रोजन के लिए, तो अगर उन्होंने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ओवरऑल चार्ज का नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हो जाएगा. electronegative means it is the attraction towards electron. It is the affinity towards the electron. तो बुक में वर्ड दिया है it is the affinity for the electron. अभी outer shell में for example there are 7 electrons. For example halogen, so they are in the need of 1 electron. So affinity will be more for electron or less. तो ज्यादा ही रहेगा. लेकिन अगर बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनका एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इट विल बी मोर और लेस एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन. और यहाँ पे देखो 5 electrons and here 1 electron. मतलब यहाँ पे there are 7 electrons. This is in need of plus 1 electron. This is in need of 3 electrons. So among this which is having more affinity towards electron?
5. Why? Because it needs more electrons. अच्छा. और अट्रैक्ट कौन ज्यादा करेगा, 5 वाला के 7 वाला? 7. 7 वाला. तो 7 वाले के पास में अट्रैक्शन ज्यादा है कि 5 वाले के पास? 7. 7 वाले के पास में. This attraction, it is nothing but affinity for the electron. Affinity means attraction for the electron in order to complete its octet state. Now it is 1 minute and 2 minutes. Sir. Then next one. एक minute. Physical property. It is in which state? Yes. Gas. Halogens are also in the gas. We are comparing in halogen. No? Then atomicity. 1. One. 2 atoms of 1 molecule of hydrogen. Atomicity is what? Number of atoms present in 1 molecule One of molecule. hydrogen. So atomicity is 2. And for halogen, what is atomicity? For halogen, what is atomicity? 2. 2. So hydrogen we are writing in this way. H2, H2. O2, N2, Cl2. Hydrogen, only hydrogen. We are studying hydrogen and halogen X2. Chlorine, bromine, जो भी आप लिख रहे हो, it is always represented as X3. So atomicity for hydrogen and halogen, it is 2, and atomicity is what? Number of atoms present in 1 molecule of an element. So we will start with which part? Properties of hydrogen. Different as hydrogen is very much. हाँ, तो मेरा जो टाइम है ना मुझे कभी भी लॉग आउट करना है. If I leave early now, there will be some amount from me, and I will. Next class we will start with the properties of hydrogen different from those of alkali metal and alloys. अभी हमने क्या देखा था? We have seen the similarities. Now we will go for the difference. Now for the next class. So I think next class we have got next please. Right, Naida. So 60. 10. Okay, all the best and all the best for this week. And one more thing, please. At least do revision for the previous topic which you have completed and which are there for your term exam. बेटा, पढ़ाई करो अच्छे से. VPS अटेंड करना. Hello, Ashutosh. ठीक है. जरूरी ना. कर रहा है. दस तुझे वाटर बॉटल नहीं चाहिए? हाँ बस. नहीं है.